Good evening, friends. I just changed the microphone. If there is any sound variations, so let me know. Please bear with me uh, if the microphone is more sensitive. Okay. So what I am doing right now is I'm going to give you an analysis or at least a method what we follow in the market. Okay. The market is very simple. It gives us an impulse, then it gives us a correction, then it gives us an impulse. Most often people can recognize this. They recognize this and they say, okay, it has come down, we will buy. Again, it comes back, we will buy. Again, it comes back, it will buy. So, in this particular correction period, you probably must have taken a hit of around 3 or 4 stop losses, and when you finally give up here, it moves out. So everyone knows this: impulse, correction and impulse. It's a simple method, but when these corrections are will get over, or when you will have a completion of correction, that is very important to understand. And to understand that, you must have some method, some sort of methods, and that method is nothing but a pattern identification. If you know patterns, say for example, I'm telling you today, let's say you know one pattern which is called 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5. So it is the start of the price rejection from peak high in the bullish market. It makes a, it makes a B, and it makes a C. The relationship between 0 to A is 1 degree, is equal to the relationship between A to B is 1 degree or less, slightly less, lesser than 1 degree. Okay. And the relationship between B to C is 1 degree. In an ideal way, it is 1.6 degree. Okay, degree in the sense, we are referring as a degree of one stroke. The stroke length is in a degree, or a stroke length you can consider. So this is an ideal pattern. Okay, but in order to understand this ideal pattern, you must have internal structures, idea of internal structures, how this three wave can unfold. This three wave can unfold into a smaller scale. It can unfold into 1 2 3 4 5. Then it can unfold A B C 1 2 3 4 5. So within this you can see three wave. Within this you can see three wave. Let me change the little color please. So within this also you can see the three wave. So these are internal structures. So that means on every degree you need to understand what the market is doing. On every degree. Okay. So let's say this is an impulse. So we are looking at a correction over here. The correction is deep. Yes, the correction is deep. Correction is so deep that 522 is the start of the impulse, and the price is almost 551, and the low of today was 532.6. Will it go up? It has to go up. Will it break this 522? That is where, when the structure changes, that is where the structure changes. Okay. So let me tell you how we see into this market. For example, I will take this one and I will take this. For example, yes, say it made a B C, then it made a B C, then we need a 1 2 3, then 1 2 3, then we have 1 2 3 4 and 5. Can you see now? So this entire structure becomes A, the example which I gave you. Now let me change this into different. This entire structure becomes B, which I have just now shown you. Now let me change this into the pinky.
So this entire structure becomes C. Okay. If you can read this, if you can understand this, none of them are impulse. Okay, this looks impulse, but it became ABC. The moment it breaks this law, we know that it's no longer going up. Or it might do one thing, that it might 1, 2, 1, 2, 1, 2, then 3, 4, 5. That means we have double degree 1, 2, 1, 2 can come. Double degree 1, 2, 1, 2 can come in the market. That is because of the long delayed progression in the stock. That means for a very long period of time, the stock was not at all in the progression. So in that condition, what happens when it has to attract investors or retailers? They do this business. They do this. They do 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So here what happens when they end this? They gave an ending diagonal on this, but people fail to understand this is a stroke of 1, 2, then it is 1, 2, single parenthesis, because we divide the degrees. Okay, so this is how the market structure is read. Market structure is read, and market structure is very simple, very simple. Even we can read it in the MACD. Okay, so this has made in a wave 1 and it is made in a wave 2, which is a very deep. So what is the meaning of deep? For example, let's say ATGL, we make an investment or we have made an investment somewhere at 600 or 650, something like that. So what is the deep to today's low? We will put it as in a today's low. So what are we looking now? We are looking, if the deep pullback is there, then the excitation will also be deep. The excitation will also be deep. Deeper enough to invalidate the previous abnormality. This was a previous abnormality. This was abnormality. This was a huge gap, and this was all previous abnormality. They were all frozen. Okay, so it is so deep that it ignores the previous abnormality. In order to ignore the previous abnormality, it has to have a 4 times movement from this low. It has to go 3,781 rupees. It has to go. So from 500, you are almost looking at 7 times greater than this. So this was actually identified by the Aaron Elliott. That is why it is called as an Elliott wave or something like that. But he basically explained in his book that he followed through Charles Dow. He basically tried to understand how Charles Dow can able to make such a valuable notes where whatever his recommendation comes on the financial market, it makes in a very strong move in a couple of weeks. So Charles Dow basically recognized this pattern in early 1900 or 1895, somewhere he started 1892 or 94 he started his research, and he got the information from the 1840 financial market book, a book which is written in the Japanese financial market in the early 1840 about a rice trader. Okay, so Mr. Homa, the rice trader, about him there was an article which was being published in early 1840, and Japanese are found and known for using all a very realistic messages or methods. Very realistic in the sense they will always connect the dots with the nature. So they saw the waves and they feel like it's a
wave type of price behavior. So they continue to use as a price moves in the form of waves, oceanic waves. And when the waves are researched, and their momentum also is also recognized over there. People recognize them as a large wave, then the small wave, 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 then again the large wave. So this is how the waves in the ocean looks like. And if you see that there is a large wave, then there is a very small wave, small wave, small wave, small wave, small wave. Then the large will come. If you understand this video, today's video, then you must understand that human behavior can be easily read through their participations. Okay, if somebody participates continuously on alcohol drinking, alcohol party, you can understand that the person is very very chaotic. That means the person have no control on his own health, or own control on his life. So they are always chaotic. They go to parties, they make party, they drink, you can easily recognize this. Yeah, admi to this person is a chiller. That means no value, no self goal, no self value. The person who is having a chaotic life. So the same thing, when you can read a person who is having the same repeating behavior, why can't you read the price patterns? It is your willingness to read the price pattern. If you want, you have to read the price pattern, you have to make a decision, you have to take a risk, and then you have to achieve your goals by taking advantage of your knowledge. Only then you can be successful. Anything, whether it is in stock market or in your life. It is simple, but it is important that you must have these kind of things. You must be very, very clear in your goals. So now I am upgrading this to 3781. Can it go above 4000? Yes, of course it can go above 4000. I am not going to talk about it. Yes, it can go. Time, how much time it can take? Very most people say, कितना दिन लेगा भाई? अरे तुम दिन का क्या कर रहे हो? तुम पैसा लगाओ ना. आज अगर आपका बेटा बेटी 8वीं में पढ़ रहा है, तो जब तक वो 10वीं में आ जाती है, अगर ये 3500 आता है, तो 2 साल में तुम्हें 7 गुना पैसा कौन देगा? 1 लाख लगाओ, 2 साल में 7 लाख रुपए ले लो. या आपका बेटा इंजीनियरिंग को आता है, तो उसको फीस के लिए आपको मिलेगा. पैसा ओवरनाइट नहीं बनता है दोस्तों. तो ये बात समझ लीजिए. दैट इज द रीजन आई गेव दिस एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अदानी का बोला, अभी सब लोगों का मुंह खोल के बैठे रहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसका क्या होगा, निफ्टी का क्या होगा. सब लोग सुबह उठ के यही सोचते रहते हैं कि निफ्टी का क्या होगा. आप लोगों को आपका पैसा बर्बाद करने में इतना शौक क्यों है? ऑप्शंस में आप पैसा नहीं कमा सकते. आज क्या हुआ निफ्टी में? पहला ऊपर गया, गैप अप हुआ, आपने कॉल खरीदा, फिर नीचे आया और आपने अच्छा, ये हमारा फोरकास्ट था. क्लोज पर हमारा फोरकास्ट था 22,344 के लिए हमारा फोरकास्ट था. आज का क्लोज होना चाहिए करके. आज गैप अप हुआ, आपने कॉल खरीदा 5 मिनट का ब्रेकआउट पे, फिर बाद में आपका कॉल डिवैल्यूएट हो गया, आपने कॉल बेचा, पुट खरीदा, फिर आपका पुट डिवैल्यूएट हो गया, फिर कॉल खरीदा, फिर कॉल डिवैल्यूएट हो गया. ये आप ऐसे धंधे क्यों करते हो दोस्तों? सीखो, बराबर से सीख के करो. में कोई नहीं है. व्हाट आई वाज प्लानिंग, व्हाट आई वाज टॉकिंग इज दैट आप गैम्बलिंग मत करो. अपने इन्वेस्टमेंट पे पैसे से आप गैम्बलिंग मत करो. एंड टुडेज बिहेवियर वी आर लुकिंग. हमने 3 तारीख का क्लोज यहाँ पे देख रहे थे. ठीक है. वी वर लुकिंग एट 3rd. मैं आपको दिखाता हूँ. प्रोफाइल पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या करते हैं. मार्च
मार्च 3rd, ये हमारे जो ट्रेनिंग सेशन के लिए हम लोग रखे रहते हैं। एजुकेशन कंटेंट एज एन ए पैटर्न रिपीटिंग एग्जाम्पल, डिड पैटर्न रिपीट, डिड प्राइस टारगेट अचीव, व्हाट आर द एरर्स और डेविएशन, ड्रॉ द नेक्स्ट पैटर्न। ठीक है, ये प्राइवेट है, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो। ये हमारे जो एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए जो रहते हैं ये प्राइवेट है, ठीक है, उनके लिए रहता है ये। एंड आई विल क्लिक दिस, यस द पैटर्न डिड रिपीट बट इट ओवरशूट और देर इज ए स्लाइट डिविएशन इन द पैटर्न। ठीक है, तो आर वी गेटिंग, यहाँ पे देखिए, आई विल शो यू दिस, ये जो नीचे आके ऐसा ऐसा खड़ा है, ये नीचे आके ऐसा ऐसा खड़ा है, आपको क्या क्या लगता है आपको? एंड इट केम फ्रॉम हियर, इट केम, बाद में ऐसा ऊपर गया, यहाँ से व्हाइट वाला नीचे आया, फिर बाद में ऊपर गया। क्लीन करता हूँ, एक मिनट, देख सकते हो, दिस व्हाइट केम बिलो, देन इट वेंट अप। हम लोग पैटर्न रिपीटिंग का एक्सपीरियंस के लिए हम लोग ये काम करते रहते हैं, यानी कि वी वर्क ऑन दोज थिंग्स वेयर वी कैन गेट न पैटर्न रिपीटेशन। तो ये पैटर्न रिपीट कहाँ से हुआ भाई? आपका सवाल रहेगा, ये पैटर्न रिपीट कहाँ से हुआ? अगर आज का डेटा यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से लेता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। बार पैटर्न मैंने यहाँ से लिया और आज का क्लोजिंग के लिए यहाँ पे, ये देखिए, यही हमने, मैंने थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि गैप अप होके नीचे आएगा, लेकिन हाँ, इसको हमने बार पैटर्न में, अच्छा ये 15 मिनट का है, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी दिखाता हूं आपको। हम लोग 5 मिनट में जाके पैटर्न को कॉपी करते हैं, 5 मिनट का, और आर वी लुकिंग दिस पैटर्न, आर वी लुकिंग दिस पैटर्न, ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न हम देख रहे हैं क्या? ठीक है, और ये 1 दिन का पैटर्न है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे ऐसे कॉपी किया, हाँ ठीक है, इस कॉपी को मैं बाहर करता हूं और मैं 15 मिनट में चलता हूं, बिकॉज प्राइस इज अ फ्रैक्टल इन नेचर, प्राइस इज अ फ्रैक्टल इन नेचर। अब बोलो, यही हमने अप्लाई किया था वहां पे। यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये नीचे ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, ये ऐसे नीचे ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ, फिर ऊपर आया, और ये जो पैटर्न्स है, इंटरनल पैटर्न्स आल्सो वी वर लुकिंग इन द सेम मैनर। ठीक है, अच्छा इसे थोड़ा लाइन में लेके आते हैं। अच्छा ये क्या, अच्छा दिस पीपल हैव सिलेक्टेड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकाल दो भाई, ये भी वाइट लेके आओ, ग्रेडियंट नहीं, सॉलिड दे दे मेरे को। ग्रेडियंट वाला देखो। और मैं आज आपको ये बार पैटर्न रिपीट दिखाता हूँ। ये आज का है, इसको कलर थोड़ा चेंज करते हैं आपको एक नॉलेज आने के लिए। ये आज का हुआ, इसमें थोड़ा कल का पिकअप हुआ है, और इसमें क्या अंतर है देख लो आप, थोड़ा सा स्लाइटली। हम लोग वो ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हुआ। हाँ ठीक है, होने दीजिए, कोई बात नहीं। यस, इट मेड एन अल्टरेशन। सो दिस इज हाउ वी सी द मार्केट। हम लोग इतना डेडिकेशन लगा देते हैं इसके लिए कि हम लोग वी ऑलवेज थिंक कि हमारा फोरकास्टिंग मेथड और हमारा एक्सेलेंसी इन परफॉर्मेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई विल शो यू। Impulse, correction, impulse, this is entirely is a correction, but it is in the form of impulse। बाद में impulse हुआ, बाद में 1 2 3 correction हुआ, 1 2 3, बाद में ये थोड़ा बहुत हुआ, बाद में impulse, again correction,
फिर बाद में इम्पल्स, अगेन करेक्शन, फिर बाद में इम्पल्स. वी विल कंटिन्यू टू गेट द सेम पैटर्न रिपीटिंग देमसेल्फ. ये टाइम बढ़ा लिया, इसका 61% ये लिया. मैं अभी दिखाता हूँ आपको, टाइम भी दिखाता हूँ. ये नंबर ऑफ बार्स देखिए, जब तक ये ब्रेक नहीं होता. 101 बार है, ठीक है. और यहाँ से देखिए इसका 55 बार्स है. अब बताइए इसका 50% ये लिया है कि नहीं लिया ना. 61.8% हम बोलते हैं अंदाजे में, और हमने यहाँ से पकड़ा है, यहाँ से, ठीक है. हमें मालूम रहती है कि मार्केट कैसा स्पीड खत्म, हाउ इट इज रिड्यूसिंग द स्पीड, वी नो ऑलरेडी. हमारा एक्सपेक्टेशन है 21,846 तक हो जाना चाहिए. एक बार ये जो हुआ, अभी मैं बताता हूं आपको. एवरीथिंग रिपीट्स इटसेल्फ, इसमें कोई लफड़ा नहीं है दोस्तों. ये जो है इसी का कुछ भाग ये रिपीट होगी. अभी इस लोअर लेवल से इसी का भाग रिपीट होगी और यहां से रिपीट होके नीचे आएगी. अच्छा, और एक कंडीशन है, इसका कितना समय में रिपीट होगा ये, कि यहां से लेकर 32 बार से, तो शायद इसका ये 20 बार्स में कंप्लीट हो जाएगा. ये यहाँ लोअर लो से 25 बार में, ये 10 बार है, 12 बार है, तो अनदर 25, 24 बार्स में. यानी कि कब भाई 24 कब होगा तुम्हारा, कल 12 बजे तक ये ऊपर यहाँ तक पहुँच जाएगा, या गैप अप होके आराम से हल्के हल्के से यहाँ तक पहुँच जाएंगे. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही है, यही रिपीट होगा. मैं बोलता हूँ आपको, द सेम बार पैटर्न विल रिपीट, यही रिपीट होगा यहां से, और थोड़ा एक्सटेंड होगा. समझ में आया, समझना चाहिए. वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट द ओनली थिंग इज वी टीच दिस. जो मास्टर कोर्स में आते हैं हम उनको सिखाते हैं कि भाई आप इसे पहचानने की कोशिश करो करके. दिस इज हाउ वी डू. एनीवे, कितना मिनट हो गया, 22 मिनट्स. चलो, वी विल सी, आई विल डील विद दिस. ये तो हुआ नहीं, कल तक देख लेते हैं. यहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, ऐसा ये गैप अप होके एक इधर कंसोलिडेट होके अगले बार गैप डाउन हो सकती है. देखते. हाँ, ऑल राइट, गुड लक.